Good afternoon, one and all present here. I would start with welcoming our Associate Director Sir Dharmendra Singh Sir, our Dean Engineering Sir Hemant Kumar Singh Sir, and our guest Pranjal Pathak Sir. Without delay, now before starting the session, I would like to tell about some good things about our guest. Our distinguished guest, Mr. Pranjal Pathak Sir, who is 1996 graduate of Electrical Engineering from IIT Kanpur. He has a Master of Science from the Department of Electrical Engineering and Applied Physics at Case Western Reserve University in Cleveland, USA. He is also an alumnus of the Indian School of Business, ISB Hyderabad, where he specialized in marketing and finance. He has also attended Qinghua University School of Economics and Management at Beijing. He has worked in various technology companies and startups in the US, UK, China and India, and currently works on the impact of information technology. He draws on his experience in addressing challenges linked to marketing communication, leadership and technology in multiple cultural environments. Now, I would like our Associate Director, Dr. Dharmendra Singh Sir, to present a token of appreciation and bouquet to our guest speaker, Mr. Pranjal Pathak Sir. Thank you, sir. It is with great pleasure that I welcome you in today's enlightening session on building expertise in artificial intelligence and machine learning. We are honored to have Mr. Pranjal Pathak Sir with us, who will share invaluable insights into the rapidly evolving landscape AI and ML. Together, let us embark on a journey of learning and exploration, fostering a deeper appreciation for the limitless possibilities that AI and ML present. Now, without further delay, I would like to invite our guest of honor, Mr. Pranjal Pathak Sir, to start the session. Sir, please. Yeah, so shall we speak from here or what do you speak from here? So we'll have around 90 minutes. We can have some questions. No, wait, listen. Okay. Anita, I can see. आप जहाँ कंप्यूटर कहाँ से आप By the way, if I don't use the mic, can you guys hear me in the back? No, I don't think. आपको आवाज आ रही है पीछे की नहीं आ रही है? अच्छा वैसे बिल्कुल नहीं ये बहुत लाउड नहीं हुआ सर, आराम से हो ठीक है जी तो see what I'll do is I'll start off with some terms actually and I'll just throw these terms out. For example, like truth, right? Consensus, सहमति, सर्वसहमति, then fairness, bias, veracity, which is again truth, सत्य, it's honesty, right? तो आपको लगेगा कि ये सब क्या है, right? How is this related to technology? तो अगर आप देखिए, whether you take a lot of technological terms or even if you look at AI/ML, they are talking about these terms, right? ऐसा क्यों हो रहा है? And that is because these are some of the foundations of interaction across intelligent entities, right? Or entities that are able to. So, truth का मतलब है, so you have data. If the data is not valid, if it is not truthful, then you are wasting your time. वो बोलते हैं ना कंप्यूटर में garbage in, garbage out. अगर आपने कंप्यूटर का प्रोग्राम ही गलत किया है, तो जो आउटपुट होगा वो useless है. Similarly, transparency. So अगर जो इंटरेक्शन हो रहा है या जो एल्गोरिथम कर रहा है आपका वो अगर बेसिकली मिसलीडिंग है या उसका जो मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं है तो कुछ जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस है फॉर एग्जांपल वेदर इट बी हेल्थ केयर और इवन इट विल बी लेट्स से आई डोंट नो सैटेलाइट नेविगेशन और कम्युनिकेशन एज वेल सम ऑफ दोज कैन बिकम dangerous for us, right? Because even in non-critical applications आप लोगों ने कई बार कहीं ना कहीं इंस्टेंसेस सुने होंगे जहाँ पे the robotic machine ने कुछ गड़बड़ कर दिया और
एक्चुअली ये तो सर्विस इंजीनियर मर गया बेचारा, या फिर चेस्ट प्लेइंग रोबोट ने एक छोटे से लड़के की उंगली पकड़ के दबा दी, ये सब हुआ है. This is all real things which has happened, right? And of course, it doesn't happen very commonly, but you have to have that depth of understanding that these things can potentially happen, right? So that's why I started with this. Just like every aspect of human behavior, जहाँ पे intelligence use हो रही है, all of those aspects we are trying to duplicate through the machines. तो जो भी ह्यूमन इंटरेक्शन में वैल्यूबल होता है वो मशीन इंटरेक्शन में वैल्यूबल होगा, राइट? सो इफेक्टिवली दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. It's almost a replication of our behavior. So anything that we see which is relevant for human interactions will become relevant for machine interactions. The second thing जो मैं आपको start off में बताना चाहता हूँ कि this is an area which has literally exploded and it is covering every aspect of our lives. तो वो आपके छोटी से छोटी चीज़ों में वो व्याप्त हो गया है, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे आजकल तो घर में लाइट भी ऑन करनी हो, राइट? टेलीविज़न में आपके स्मार्टनेस आ गई है. तो the technology has spread every aspect already, and इससे आगे जो होने वाला है, that itself is going to be a massive, जैसे बोलते हैं paradigm shift होने वाला है हम लोग की लाइफ में in terms of the changes that can happen. Then it is extremely critical as well. ये इतना wide हो गया है because of one is हम लोग intelligence की बात कर रहे हैं, तो human behavior की बात कर रहे हैं, दूसरा because it is touching every aspect of our life. तो आप जैसे ये कह सकते हैं चाहे ये हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करेगा, हमारे पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करेगा, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को करेगा, हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा. एंड इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स रिलीजन ऑल्सो. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लिकेट करते हैं तो वन ऑफ द जिसको होली ग्रेल बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू वांट टू अचीव व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग नोन एज सेल्फ अवेयरनेस, राइट? मैं कौन हूँ वो अवेयरनेस अगर उस मशीन में डाल रहे हैं, बिकॉज पहले हम अंडरस्टैंडिंग डाल रहे हैं, फिर हम अवेयरनेस डाल रहे हैं. तो इफेक्टिवली द कॉन्सेप्ट्स दैट हैव एक्जिस्टेड इन रिलीजन और एसेंशियली द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एआई आर गोइंग टू इम्पैक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एज वेल, राइट? So these are the two things, right? One is cultural behavior, उसके बाद फिर दूसरा it is expanding and touching every aspect of our life. अब थर्ड चीज जो होगी क्रिटिकल कि हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर इट, राइट? कि हम क्या कहते हैं व्हाट इज द एजुकेशन वी नीड, व्हाट आर द स्किल्स वी नीड, हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या करना है. तो उसके लिए व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू दैट दिस इज बिकॉज इट इज टचिंग एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, द नॉलेज दैट यू नीड in that field is also extremely vast, right? So it has to be one, it has to be teamwork. So not one individual is going to become an expert in all the various things. Second, you do have to develop a good foundation, right? तो जो भी आपने, जैसे अभी आप अंडरग्रेजुएट में हैं, तो जो भी आपने 10th 12th तक पढ़ा है वो आपका यूज हो रहा है, you're building on that, right? in your undergraduate education. हो सकता है आप 4 साल तक आप कंप्यूटिंग करें, मैथ्स करें, आप पॉलिटिकल साइंस भी करें, वो सब जो भी आप एट द एंड ऑफ द डे wherever you reach after that, all of that knowledge will get accumulated and will be potentially useful, and then you have to build on that, right? तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं, the foundation of artificial intelligence is mathematics and statistics. Some of the algorithms जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं वो 50s में, 60s में, 70s में डिस्कवर हो गए थे या फिर लाइक वो प्रपोज हो गए थे. समटाइम्स वो उस समय पॉपुलर नहीं हो पाए बिकॉज जो हम लोग का जो एकेडमिक वर्क था दैट हैड एडवांस्ड क्वाइट अ बिट, बट द टेक्नोलॉजी, द एग्जीक्यूटिंग ऑफ दैट हैड नॉट क्वाइट रीच्ड द पॉइंट वेयर वी कुड bring all that academic knowledge into execution and do something with it, right? So science is always a little bit ahead of engineering. So the philosophy is cutting edge, then science comes out of philosophy, and then engineering is following science to some extent. Because engineering is trying to do what science has proposed, right? To make things happen, to build things.
So mathematics and statistics, उसके बाद फिर then programming. So programming is something which has come out of like, of course, what is happening is that maybe the first computers were built around 50-60 years ago, and what we were doing is we were building on the hardware, improving the hardware. At the same time, we were trying to figure out how to interact with that hardware or that machine, right? So कोई भी अगर machine है उसको अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो some way or the other you have to give instructions to that machine. Now normally what happens is the instructions are being given in like some machine language, in bits and bytes, 0011 जो भी करके, and so way back when you had to program a machine, you had to do it in the machine language itself. Now that is very difficult to do. आपको बड़े-बड़े प्रोग्राम बनाना मुश्किल होगा, because even 10 लाइन लिखने में आपको काफी चैलेंज होगा, right? पंच कार्ड्स में काम हो रहा है. So the way that development progressed, कि उन्होंने higher level languages develop की, right? So you developed C, now you've reached Java, Python, and so on, and उन languages को फिर एक compiler या interpreter उसको machine language में convert करता है, and then the machine language goes into the machine, and then the machine does whatever it needs to do, follows those instructions, right? And then as we are getting into higher and higher level languages, अब हम लोग इस stage में पहुंच गए हैं, which is most famous thing, right? The ChatGPT stuff, where you can interact with a machine in almost a human language, right? So let's say from being in a situation where you have to learn the computer language in order to interact with the machine, अब आप साधारण language में भी, भाषा में भी आप computer के साथ interact कर सकते हैं, right? So now that doesn't mean that your expertise as a computer scientist or as an engineer goes away. Lekin what it does mean is that now there are people who don't have to have knowledge of computer science, who can also interact with machines in ways that maybe 50 years ago a computer scientist or a programmer was interacting, right? So वो आसान हो गया आपका उस machine से interact करना. So that's also a good thing, right? But the reason I was building up all this is to give you an idea कि ये कितना vast है. Foundation is mathematics science, mathematics and statistics आया, फिर computer programming आया. अब actually computer programming has reached a stage where आप उसको क्या कहते हैं, किसी भी language में use कर सकते हैं, but you still need application level knowledge as well, right? तो जैसे कोई भी data, जैसे finance sector का data है, right? और आप let's say एक medical doctor है, हो सकता है, और आपने क्या कहते हैं machines का interact कर रखा है medical doctor field में, लेकिन जो finance sector की application knowledge वो आपके पास नहीं है. So आप जो tools हैं, जो artificial intelligence के tools हैं, जो machine learning के tools हैं, which apply to the finance sector, आप नहीं use कर पाएंगे. I mean, हो सकता है use कर लें, लेकिन the thing is you have to build that extra expertise in that field, right? So there is an application level knowledge which is also required before you can make use of or actually contribute to the development as well of the tools जो कि इस problem solve करेंगे. So 3 layers मैंने आपको बताई हैं. In reality the layers are even more than this. The first is of course the foundational layer, जो कि आपकी क्या कहते हैं mathematics, statistics की layer है. उसके बाद उसके ऊपर फिर आपकी एक higher level computing programming की layer है, और उसके बाद फिर आपके ऊपर एक application की layer है, right? So जो foundational layer है वो help करती है in order to develop the languages which the computers will use and develop the algorithms. और फिर जो programming वाली layer है that helps to build the, let's say अगर आप Google use कर रहे हैं या फिर आप Microsoft Word use कर रहे हैं, तो someone built those tools, right? And then what are you using these for? That is your application level layer. तो ये सब, all of these are effectively getting impacted, and any of these layers में अगर आपने एक expertise build कर ली है, which goes to the depths of understanding of how the inner structure works, तो आप benefit भी कर सकते हैं, आप contribute भी कर सकते हैं इस पूरे structure में, right? So expertise अगर आपको build करनी, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ mathematics and statistics ही सीखनी है या फिर सिर्फ computer programming ही सीखनी है. Even अगर आप अपने किसी और field में आप एक level of excellence पहुंच गए हैं या एक depth of understanding पहुंच गए हैं, so then you essentially you are part of the team where you are both benefiting from and helping in the future development of these tools.
तो अब मैं इसको एक डिफरेंट सेट ऑफ लेयर्स से भी आपको प्रेजेंट करता हूँ, राइट? तो अभी हमने एक ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे anyone outside who's in the real world is getting impacted by this technology, वो कैसे देखता है? अब now let's look at it from within the technology perspective, right? अच्छा, I guess you all have done mathematics, right? तो ये जैसे mathematics ने की है undergraduate level पे? Okay, very nice. तो so you are all technology people. तो अगर हम technology side में देखें तो वहाँ पे भी layers form हो रही हैं, right? तो वहाँ पे भी क्या form हो रहा है? पहले तो you need hardware. तो अगर कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो आपको you actually need the computer, the machine, which itself is requires multiple levels of expertise, right? तो पहले the high level design of the system, इसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जो चिप की डिज़ाइन में भी मटेरियल साइंटिस्ट भी होगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर भी होगा, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होगा, फिर फिजिसिस्ट भी होगा, केमिस्ट भी होगा, केमिस्ट्री की नॉलेज भी इन्वॉल्व होगी, बिकॉज जो चिप्स बनती हैं दे आर ऑपरेटिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स, so you need to understand the chemistry behind it, the physics behind it, and then you need to develop the knowledge of metallurgy, and then you have to have a level of understanding of the electronics as well, because वो उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स सर्किट्स बन रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद लेट्स से अब आपका हार्डवेयर पूरा बन गया. Now what happens is now you need to develop the expertise to program that hardware, right? So this is a bit of a repeat, but now we are looking at it from a different perspective. तो अब इस प्रोग्रामिंग हार्डवेयर जो लो लेवल हार्डवेयर प्रोग्राम होगा उस मशीन को यूज़ करने के लिए, दैट इज व्हाट यू वुड आइडेंटिफाई एज फर्मवेयर, राइट? एंड देन उस लो लेवल के बाद फिर आप एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर वो करेंगे, एंड देन सॉफ्टवेयर में भी कई ग्रेडेशंस होंगे. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ how the field explodes, right? So let's take something like data science. वैसे आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है ना? Okay. तो अब डेटा साइंस में देखिए क्या है कि एक डेटाबेस इंजीनियर है, फिर एक डेटा साइंटिस्ट है, फिर एक डेटा आर्किटेक्ट है, फिर एक डेटा एनालिस्ट है, फिर एक बिजनेस एनालिस्ट है. अब सब बहुत सिमिलर लग रहे हैं, बट इन रियलिटी इन लोगों की एक्सपर्टीज इतनी डिफरेंट है कि आप एक फील्ड से अगर दूसरे जॉब रोल में जाते हैं तो यू विल हैव अ रीजनेबली गुड लर्निंग कर्व टू फिगर आउट कि वहाँ पे क्या हो रहा है. एंड कुछ जॉब रोल्स में जाने के लिए आपको एक हो सकता है प्रेजेंट डिग्री नहीं, बट दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस अक्रॉस दीज वेरियस फील्ड्स, राइट? तो जैसे अब डेटाबेस इंजीनियर क्या करेगा? डेटाबेस इंजीनियर में एसेंशली क्या है कि जो डेटा है वो कहीं पे स्टोर हुआ है, तो उस स्टोरेज में क्या कॉम्प्लेक्सिटी ये देखिए. तो पहले तो क्या है कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी आएगी, वो कौन से कार्ड में है, कौन से हार्ड ड्राइव में स्टोर हुआ है. उसके बाद फिर बट दैट इज नॉट द वर्क ऑफ द डेटाबेस इंजीनियर. फिर उसके बाद फिर क्या है कि वो प्रोसेसेस आएंगे कि किस प्रोसेस से आपने उस डेटा को लेकर के उसमें डाला है. सो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डूइंग, व्हाट इज द सिस्टम दैट इज सेट ऑफ द स्ट्रक्चर. वो काम आपका डेटाबेस इंजीनियर का आएगा. तो वहाँ पे हो सकता है मे बी the most common database that has been used throughout history in computer science is the relational databases, right? तो उसमें एक relation database management software होगा. So the engineer who builds the relation database management software system will operate at a different level than the engineer who comes along and then uses the RDBMS, right? उन दोनों की expertise में थोड़ा difference होगा. एक में आप उस system को build कर रहे हैं, दूसरा फिर अब आप ये फिगर आउट कर रहे हैं कि उस सिस्टम में आप डेटा को कैसे स्टोर करेंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे, राइट? सो द बेसिक फाउंडेशन बोलते हैं, इसे CRUD बोलते हैं. CRUD इज बेसिकली यू आर क्रिएटिंग द डेटा, देन यू आर अपडेटिंग इट, यू आर रिट्रीविंग इट, कहीं पे स्टोर किया है, यू हैव टू गेट इट बैक, एंड देन यू आर डिलीटिंग इट. सो दीज आर द 4 क्रिटिकल situations that you need to handle. So now this is the role of the database engineer. यहाँ पे ये बिल्ड हो रहा है इसके, राइट? उसमें फिर उसके चैलेंजेस ये होंगे कि आपने वो डेटा स्टोर किया और वो डेटा उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस. तो उसमें उस डेटा की रिलेशनशिप्स बनती हैं दूसरे डेटा के साथ, राइट? सो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप्स होंगी. तो लेट्स से हम लोग का एजुकेशनल डेटा सिस्टम है. वी हैव डेटा ऑन ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? तो हर क्लास में आपका कुछ डेटा है एंड द डेटा इज स्प्रेड आउट ओवर 4 years. नाउ एक क्लास से दूसरे, जो आपने एक टेबल बना दी अपने लेट्स से
I don't know, आपने data structures class की एक table बन गई, all the students are registered. Now let's say we go back to the AIML class. AIML class में हो सकता है the same students are not there, right? But there's some overlap with the students. वहाँ पे आपने एक दूसरा table बना दिया होगा. वैसे ही हो सकता है you have got 10 different subjects, हर एक का एक table बन गया. But what happens is that table has a lot of duplication, right? So basically आप किस year में हैं, आपका हो सकता है background क्या है, आप क्या पढ़ के आए, आप किस स्कूल से आए, हो सकता है वो सब information या फिर आपके उस कोर्स के लिए prerequisites क्या हैं, right? So maybe data structures course के पहले आपको maths 1 कोर्स करना पड़ा, right? या email कोर्स के पहले आपको maths 1 भी करना है, हो सकता है database कोर्स भी करना पड़े, तो उसकी 2 prerequisites हैं, right? So वो information आपके नाम के साथ इस टेबल में भी स्टोर होगी, डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में भी स्टोर होगी और आपके साथ वो क्या कहते हैं AIML के कोर्स में भी स्टोर होगी, right? So now this is a lot of duplication of information. Now let's say वो information कहीं पे चेंज करनी पड़ गई, कोई एरर हो गया, तो अब आपको वो 10 टेबल में जाकर के चेंज करना पड़ेगा, right? So the relational database, the concept of relation over there is कि आप अपने databases को ऐसे डिजाइन करें कि the relation between one to the other is maintained in an efficient manner, right? So there's a whole science behind it, and the people who have it's taken a lot of time to develop what are the processes you need to follow, how should you make sure that the database integrity is maintained. Integrity का मतलब क्या होगा कि जैसे हो सकता है आपको एक कोर्स के डेटा टेबल में कोई एरर मिला, उसको आपने जाके बदला, लेकिन वो एरर प्रोपगेट नहीं हुआ, तो AIML कोर्स में वो एरर अभी भी है, राइट? अब सपोज आपने उनको लिंक कर दिया और वो प्रोपगेशन में एरर हो गया, तो दिस इज द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस कि वो अगर आप स्टूडेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो अक्रॉस ऑल द वेरियस व्यूज जो आप ले रहे हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिले अक्रॉस द बोर्ड, राइट? सो ये सब तो पूरे चैलेंजेस हो गए आपके डेटाबेस इंजीनियर के, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द डेटा साइंटिस्ट क्या हुआ फिर. सो डेटा साइंटिस्ट का हुआ कब होगा कि अब आपके पास लेट्स से डेटा आया, क्या कहते हैं उस स्टूडेंट का ओवर द लास्ट 4 years, राइट? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा कैन यू क्या कहते हैं पास्ट हिस्ट्री चेक करना चाह रहे हैं कि क्या रहा, एंड यू आर ट्राइंग टू कोरिलेट इट विद अदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो द वर्क ऑफ द डेटाबेस इंजीनियर वाज प्रोग्रामिंग हेवी. द वर्क ऑफ द डेटा साइंटिस्ट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हेवी. यहाँ पे आपको लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ देन लेट्स लुक एट द डेटा आर्किटेक्ट. डेटा आर्किटेक्ट क्या करेगा? अब डेटा आर्किटेक्ट ये करेगा कि लेट्स से आप क्या कहते हैं कोई बिजनेस में है, राइट? सो यू आर द डेटा आर्किटेक्ट ऑफ लेट्स से मार्केटिंग कंपनी. Now what you have to figure out as a data architect is कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेलिवेंट है, उस डेटा के साथ आप कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. Now this is very different from what the data scientist was doing. Data scientist was actually doing the mathematics behind this. The data architect is looking at the business aspect is requires a lot of experience. अब हम business data analyst के पास चले जाते हैं, right? So what is the data analyst going to do? The data analyst is actually going to understand what data is, what can you derive from the data, and जो predictions हैं वो valid है कि नहीं है, how do the predictions connect with what the current scenario of your business is. So how is this different from the data scientist? The data scientist potentially tools build कर रहा था, right? He was talking about the mathematics and the statistics. लेकिन the data analyst does not need to worry about the mathematics and statistics. वो सिर्फ एक ग्राफ देख करके उसको real world से connect कर सकता है. रियल वर्ल्ड. सो द डेटा एनालिस्ट का जो फोकस है वो रियल वर्ल्ड पे है, और जो डेटा साइंटिस्ट का फोकस है वो बेसिकली उस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन पे है जो उसको बिल्ड कर रहा है, राइट? और जो डेटा आर्किटेक्ट है वो ये डिटरमिन कर रहा है कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा. सो द डेटा आर्किटेक्ट विल डिटरमिन कि हम लोग कौन सा डेटा यूज़ करेंगे. द डेटा साइंटिस्ट विल डिटरमिन कि हम कौन सी मैथमेटिक्स लगा करके उससे कौन से चार्ट्स बनाएंगे. द डेटा एनालिस्ट विल डिटरमिन कि इन चार्ट्स को हम कैसे रीड करके हम इसमें से जो क्या डिराइव कर सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में अप्लाई होता है, राइट? And then, so the data analyst role is similar to the business analyst. Taking business analyst to some extent, you can operate at a higher level where you can start, instead of looking at data, you can start looking at information. तो मैं आपको एक और थोड़ा basic definition दूँ. See, data is usually जैसे numbers आ रहे हैं. There's a whole table that is data. जो उसमें से आपने collectively जो आपने derive किया
जो उस डेटा से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू इंफॉर्मेशन है. So information is kind of like a bigger set than data. Data will be just numbers. Information will actually tell you what do those numbers mean, right? And then, but information is not knowledge, right? तो आपके पास हो सकता है जैसे जो मैं जैसे डॉक्टर ने कुछ बोला और तो डॉक्टर एक्सपर्ट है, डॉक्टर ने वो बोला, वो आपने रट लिया, पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है? उसको आप जाकर के किसी और को नहीं बता सकते. ये लोग बताते हैं पर ये नहीं करना चाहिए, राइट? तो डॉक्टर ने कहा कि आप पैरासीटामोल यूज़ करिए, फीवर है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, पर आपने जाकर के किसी और को फीवर है उसको पैरासीटामोल दे दिया, तो ये गलत बात है, राइट? जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, हो सकता है वो डॉक्टर के पास है, डॉक्टर भी उसको पैरासीटामोल ही देगा, बट द डॉक्टर हैज़ अ नॉलेज क्यों देना है, कब देना है, कैसे देना है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट हो सकता है उस इंडिविजुअल जिसने के पास नॉलेज ना हो, अगर वो डॉक्टर नहीं बना तो उसका नॉलेज नहीं है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. And then on top of knowledge you build wisdom, right? So there's data, there's information, there's knowledge, and then there is wisdom. So normally what happens is चाहे आप वो WhatsApp यूनिवर्सिटी देखिए जो भी देखिए, when people are copying and pasting, what they're doing is they're copying and pasting information. They're not copying and pasting knowledge, and that is dangerous actually, because information क्या है कि information में अगर context नहीं है, इसको वैसे data context भी बोलते हैं कि ये data कहाँ से आया, क्यों आया, सब क्या background है उसकी, ये data किस केस में valid है, तो वो उससे जो आप decision लेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा. So decision making requires knowledge, not just information. सिर्फ information में अगर आप operate करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, right? So again, so when we go back to that explosion of the fields, कि क्या क्या हो रहा है, whether there is a database engineer, data scientist, data architect, data analyst, business analyst. So this is how some people are operating on the numbers, some people are operating on information, some people are operating on the knowledge level, the application level knowledge, right? So ये क्या कहते हैं, to some extent आपका ये foundation हो गया, and the idea over here was to give you कि one, it is touching every aspect of your life. And second, in order to get your arms around it, in order to understand what is going on, आपको खुद को wide expertise build करनी है, right? तो जैसे अगर आप, let's say आपने decide किया आपको data scientist बनना चाहते हैं, that is perfectly fine. And आपको लगे कि इसमें decide data analyst बनना चाहते हैं, पर वो सब आप सभी में से होंगे, right? So जो आपको foundation मिल रही है, वो foundation आपको build करनी है. ऐसा नहीं है होगा कि आपने data analyst बनना चाहते हो, आप mathematics को छोड़ दें, ये नहीं allowed है, right? ये नहीं चलेगा. तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड साइंस, आप साइंस क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स साइंस आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू गो ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स, राइट? क्या कहते हैं, स्पेशलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप किसी भी, जैसे डेटा साइंस को देख लीजिए, आजकल क्या है, आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी इन डेटा साइंस. 10 years ago this didn't exist. Right? So 10 years ago, कोई अगर data science बोल रहा है, तो they are assuming that you are either part of the department of mathematics, or statistics, or department of computer science, right? So there's not special. So जो knowledge base है वो तो expand कर गया है कि वो अब आप एक specialized degree, तो you're spending about 4 years just focused on building expertise in that area, right? Now you go back 40 years ago, computer science भी नहीं था, right? So yeah, तो फिर mathematics था, statistics था. So that is how things are expanding, and आपको जो core foundation है वो आपको वैसे भी build करनी है. Now before I go down further, what I want to tell you is a lot of people get scared with mathematics and statistics because they are extremely involved subjects. तो ऐसा नहीं है कि easy subject नहीं है, आपको time देना पड़ेगा. However, at the same time, everyone can do it, right? तो normally क्या होता है कि आदमी people, the students, वो डर जाते हैं कि क्या कहते हैं, कई बार पहली बार हुआ, समझ नहीं आया, वो आधे घंटे का क्लास था, कुछ हवा नहीं लगी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, हो सकता है कि टेस्ट हुआ, टाइम नहीं मिला आपको, आपने प्रिपेयर नहीं किया, टेस्ट में गड़बड़ नंबर आए, तो सडनली अब वो जो डर है वो इतने गहरे तरीके से बैठ गया है कि अब आप वो नहीं सीख पाएंगे, राइट? बट दैट इज नॉट हाउ इट नीड्स टू बी, राइट? एवरी वन ऑफ यू, even every one of people who have actually gone down the art stream, if they devote sufficient time, तो आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, right? Problem is कि वो one is you have to overcome that fear, and then you have to devote time.
अगर आप sufficient time devote करेंगे तो you can build a concept. So it's not as if you should not feel afraid कि भाई ये बहुत जो mathematics होगी, जैसे जो data scientist mathematics कर रहा है बहुत involved हो जाएगी, right? And it will get so involved that जैसे let's take a concept like linear regression. आप सबने linear regression सुना होगा, ये क्या होगा? Is that right? Can I get an answer? ठीक है, I'm sure आपने किया होगा, आप लोग हो सकता है कंफर्टेबल नहीं फील करें, बट आई टेल यू व्हाट दैट लिनियर रिग्रेशन इज. आपने 12th में भी किया होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी स्टैटिस्टिक्स की होगी, क्योंकि आपने क्या होगा, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाए होंगे, राइट? हिस्टोग्राम बनाया होगा. तो फ्रीक्वेंसी टेबल्स मींस यू हैव कलेक्टेड, यू हैव अ टेबल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. उस डेटा हो सकता है वो दो अलग-अलग चीज़ों के बारे में डेटा है, राइट? सो द डेटा इज पेयर्ड. So normally जैसे अगर आप कोई XY पार्ट में भी डेटा को डालते हैं, तो that means each point essentially has two values, right? So you are seeing value X and then you are seeing the value Y, and they both happen simultaneously, so they are located as part of one point, right? जब आप data collect करते हैं उस XY table पे, then there's a whole bunch of dots all over the place, and those dots, each dot represents a data point जहाँ पे X value और एक Y value है, right? तो अब let's say कोई एग्जाम्पल देखते हैं, राइट? सो लेट्स से एक्स वैल्यू इज की व्हाट इज द ईयर ऑफ द स्टूडेंट, राइट? लाइक किस स्टूडेंट लिखता है, द वाई वैल्यू इज ऑन दैट सेम एग्जाम हाउ मच हैज द स्टूडेंट परफॉर्म. सो आई टेल यू व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. आई हैव टेकन दिस एग्जांपल बिकॉज पहले तो क्या है, सेम प्रॉब्लम आप क्लास 7 के स्टूडेंट को देखेंगे तो हो सकता है उसको टफ लगे, क्लास 8 को देंगे तो उसको आसान लगे. So it is not the problem that is tough, right? It's the expertise with the student has, the knowledge base the student develop, which is going to determine whether the problem is going to be tough or not. तो अगर आप sufficient expertise build करते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम आसान होगी. तो एक एक्सिस पे आपको सपोज ईयर है, दूसरे एक्सिस पे आपका परफॉर्मेंस है, द स्कोर दैट इज, और वो पूरा कहीं ना कहीं वो एक स्कैटर मैप बन गया, राइट? अब उसमें अगर आप ये दिखा रहे हैं कि कोरिलेशन है कि नहीं, क्या कैन यू से दैट अगर कोई ज़्यादा ईयर्स स्टडी करता है तो उसका नंबर ज़्यादा आएगा उसी प्रॉब्लम में, राइट? तो ऑब्वियसली होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा पढ़ा है या समझ गया है तो उसके ज़्यादा आना चाहिए. सो इवन द डेटा इज स्प्रेड आउट ओवर द प्लेस, बिकॉज क्या है कि द डिफरेंट स्टूडेंट्स विल परफॉर्म डिफरेंटली, राइट? एंड द सेम स्टूडेंट एट डिफरेंट टाइम्स विल परफॉर्म डिफरेंटली. हो सकता है उसने एक एग्जाम में जनवरी में उसको 90 किया, उसके बाद सेम एग्जाम में हो सकता है अगस्त में क्या कहते हैं 70 आ गए, क्योंकि हो सकता है उसने मूड ऑफ था, राइट? सो अब जो कोरिलेशन है, व्हाट द स्टैटिस्टिक्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रेजेंट दैट रैंडम डेटा स्प्रेड आउट ओवर द स्कैटर एज अ स्ट्रेट लाइन, एंड तो उसमें से आप एक स्ट्रेट लाइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ what is the right straight line to fit into that data, that process is called regression, right? And the regress का मतलब होता है you've taken a step back. तो इसको regression क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखने में तो you've taken a step forward, you develop a better understanding. तो regression इसलिए बोल रहे हैं because the data is all over the place. जब आप data देखेंगे तो वो non-linear दिखेगा, right? उस data में actually has much more information than just that linear map. लेकिन आपने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर दिया है इनटू अ लीनियर मैप इन ऑर्डर टू मेक सेंस आउट ऑफ द डेटा. तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हाउ व्हाई इज दैट रिडक्शन इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डज दैट रिडक्शन शो इंटेलिजेंस, राइट? अब जैसे मैंने आप लोगों की शक्लें देखी है, तो हो सकता है कुछ लोगों की शक्ल मेरे को याद होगी, लेकिन अब वापस मैं अगर उसको आंख बंद करके उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू बिल्ड इट. सो टू बिल्ड योर कंप्लीट फेस लाइक अ पिक्चर. लेकिन अगर मैं आपको देखूंगा तो विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज, है ना? ये सब हम लोग करें. सो द वे द माइंड ऑपरेट्स इज वी आर बीइंग ओवरबर्डन्ड विद मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी टाइम, लेकिन द माइंड इज एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन मेक अ चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट? तो जो पैटर्न रिकॉग्निशन हो रहा है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो रहा है. तो जो लीनियर रिग्रेशन है वो यही कर रहा है, जो पूरा डेटा है वो पूरा स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस है, उस डेटा में कई रिलेशनशिप्स हैं, राइट? सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमने उसमें से एक रिलेशनशिप निकाली जो हम चाहते थे कि एज द नंबर ऑफ इयर्स इंक्रीज द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स टू ईच दैट सेम प्रॉब्लम गेट्स बेटर एंड बेटर. बट उस डेटा में बहुत सी इंफॉर्मेशन है,
उस डेटा में हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स मे ऑपरेट डिफरेंटली, right? So one student will be very good at statistics but may not do well at mathematics. Another student may do very well at mathematics but may not do well at statistics, right? So हर एक unique है. तो and that information is also captured in that data. पर हमने क्या किया, रिग्रेस करके सिर्फ उस डेटा पर फोकस किया जो हमें उस रिलेशनशिप को दिखाता है, जो रिलेशनशिप से हम इंटरेस्टेड थे, राइट? तो दिस इज, तो पहले दो चीज़ें हुई यहाँ पे. पहले हमने बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया. दूसरा, उस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को हमने कुछ चीज़ें, कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी उसको डिस्कार्ड कर दिया. तो दिस इज इंटेलिजेंट बिहेवियर, फोकसिंग ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट and discarding what is not important, and this becomes part of a mathematical equation, a mathematical algorithm, and then once it becomes part of a mathematical equation or algorithm, then you can program it, and एक बार वो प्रोग्राम हो गया, फिर वो ऑटोमेटेड फॉर्म में कोई मशीन आपको यूज कर सकती है, राइट? सो तो ये दिस कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द मैथमेटिक्स that builds all these algorithms of artificial intelligence. Okay. Now, what is there are other big key things also. Let me give you a second key, right? अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, right? तो गाड़ी चला रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि you will stay operating within the speed limit. तो स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर/आवर, आपने एक्सीलेटर दबाया, लाइक आप 45 निकल गए, तो सडनली आपने देखा कि स्पीड लिमिट 40 दिखा रहा है, राइट? आप यू आर अ कॉन्शियस पर्सन, आप सब रूल्स फॉलो करते हैं, शायद मान लेते हैं, हो सकता है नहीं करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आप सब रूल्स फॉलो करते हैं. तो आप क्या करेंगे, फिर आप एक्सीलेटर को थोड़ा धीमे कर देंगे, राइट? सो दैट यू कैन ब्रिंग योरसेल्फ बैक विद इन द स्पीड. तो जो आपने धीमे किया, दैट इज बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म. तो जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, वेदर यू लुक एट अ कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है, वो सेंसर मेजर करेगा कि स्पीड क्या है, उस मेजरमेंट को वो वापस फीड करेगा टू द पार्ट विच इज जनरेटिंग द सिग्नल फॉर द एक्सीलरेशन. वो एक डिफरेंस देखेगा कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट इज 40 किलोमीटर/आवर, स्पीड इज 45, डिफरेंस इज 5, उस 5 को प्रोसेस करके वापस सिस्टम में डालेगा. So this is known as the feedback mechanism, right? So all control systems, whether you are operating in mechanical controls, chemical controls, electrical engineering controls, electronics controls, they all operate on this one of the foundation concepts of that. Feedback mechanism. This is also the foundational concept of intelligence. You have feedback operate करता है, right? And तो जो आप feedback लेते हैं, उस feedback के basis पे आप अपना behavior change करते हैं, वैसे ही the machine. So अभी मैंने आपको दो चीजें बता दी. पहला linear regression, where you reduce the number of information and on the basis of reduced information आपने action किया. दूसरा क्या कहते हैं, feedback mechanism, right? तो अब इस फीडबैक मैकेनिज्म में मैं लेट मी टेक, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मेरे को पता चल रहा है क्योंकि एक बेचारे को थोड़ी नींद आ रही है. मैंने कहा you are always trying to do more. You are always trying to do more, and that is good, right? You are driven to do more. तो क्या कहते हैं कि हम रात को 12 बजे 2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद लाना तो तो सर क्या है जो फीडबैक मैकेनिज्म है, अब इस समय आजकल एक मानिया चला हुआ है पॉजिटिव फीडबैक, राइट? सो अच्छा, अगर आपको नींद आ रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. प्लीज कीप साइलेंट एंड क्लैप. Other language now, so please keep silent. अब ये this it's such a coincidence कि ये connect करता है with what I was going to say next, right? I was going to tell you about positive thinking and I was going to connect it with the feedback mechanism जो बात कर रहे थे. अब जब आपने clap किया तो इससे क्या हुआ, खुशी मिली, right? खुशी पॉजिटिव थिंकिंग हुई, तो एनर्जाइज हो गया. आपको भी खुशी मिली कुछ समझते तो मेरे को भी खुशी मिली, right? तो वैसे क्लैप आप नहीं चाहते क्लैप नहीं करेंगे, तो कैन बी फोकस ऑन लर्निंग आल्सो, लेकिन तो जब तक पॉजिटिव थिंकिंग सपोज टू हेल्प यू थ्रू दिस एनर्जाइजिंग मैकेनिज्म. क्या हुआ? Was it a question, comment? You should feel free to ask questions and comment. If anybody want to ask any question, so please raise your hand. And clapping is only for नींद से जगाने के लिए था. तो क्या कहते हैं, सो
सो बट इस समय क्या हो गया, एक मानिया सा बन गया है पॉजिटिव थिंकिंग का, एंड दैट इज ऑल्सो डेंजरस, राइट? सो बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द रियलिटी। इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि फेलियर हो गया है या कोई क्रिमिनल एक्शन हो गया है, उसको छुपाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ध्यान भड़का करके पॉजिटिव थिंकिंग हो रही, दैट इज नॉट गुड, राइट? और व्हाई इज नॉट गुड? लेट्स कम बैक टू द कंट्रोल सिस्टम एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। आपकी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप रूल्स के अंदर हैं, रूल्स कहता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो गड़बड़ होगा, राइट? सो इफ यू so positive thinking has to be operated with a sense of responsibility, right? You should feel energized, you should feel as if you are doing the right thing, but you should also make sure that you are doing the right thing. And अगर failure हो गया है तो it is important to accept कि failure हो गया है, क्योंकि तभी तो learning होगी, तभी तो पता चलेगा कि क्या अलग करना है। तो अगर फेलियर हुआ तो उसको वी हैव टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, राइट? कि क्या गलत हुआ, हो सकता है मेरे को ये अलग करना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें जो आपको सीखनी है वो फिर सीख करके आपको वापस एक बिहेवियरल चेंज लाना है। सो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? तो पॉजिटिव थिंकिंग ये हर चीज़ में हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन ऑटोमेटेड फैशन, इट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, वी आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। वेदर आपने कोई एग्जाम किया, एग्जाम में आपको मार्क्स मिले, दैट इज ऑल्सो द फीडबैक मैकेनिज्म कि आपने कितना सीख लिया, आपको कितना सीखना है, राइट? तो सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फीडबैक आपके पास आ रहा है वो वैलिड हो। अगर उस फीडबैक को पॉजिटिव थिंकिंग में आपने स्मज कर दिया, हाइड कर दिया, तो द सिस्टम इज बाउंड टू फेल। सो वी शुड नॉट अलाउ दैट। सो दो चीज़ें मैंने आपको अभी क्लियर की हैं। एक है रिग्रेशन, where we are reducing the amount of information in order to make intelligent choices. इसको आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, called focus, right? So when you are sitting down and reading something, at the same time you are an intelligent human being. You have lots of senses, आँखें हैं, कान है, नाक है, वहाँ से कहीं महक आ रही है, कोई खाना बन रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, वो सब आपको इंटरफेयर कर रहा है, राइट? बट आपका क्या गोल है? फोकस है, राइट? So the focus is you've reduced, you've discarded the irrelevant information, focused on what is your current goal, right? And so that is the linear regression part. The second part is the feedback mechanism, right? Positive thinking अच्छी है, but only with as long as it is connected with reality. So ये दोनों चीज़ें automated world में भी हो रही हैं. I'm just connecting it with the real world in the hope that you'll remember it. So ये दोनों चीज़ों की. अब तीसरा बोलते हैं कि भाई आपका मॉर्निंग में क्लास है, 8 o'clock 7 o'clock आपने रियलाइज किया कि जो आपने होमवर्क किया वो आपको मिल नहीं रहा है, राइट? सो नाउ दिस इज द सर्च प्रॉब्लम। चाहे गूगल पे सर्च करके होमवर्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, वी आर गुड एट सर्चिंग थिंग्स, राइट? एंड सो दैट इज व्हाट द मशीन हैज बीन कम अप विद टुडे, सर्चिंग थिंग्स। तो अब सर्च का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे सर्च का मतलब आपको लगता है जैसे हमने कोई आंसर दिया, वो सर्च करके all the various pieces of documents में वो आंसर आपको ढूंढ के बता रहा है। तो we can think of it in a more formalized fashion. Whenever I talk about formalization, that means हमने इस प्रॉब्लम को एक mathematical language में express कर दिया। So the importance of expressing it in a mathematical language is that it becomes very structured and very defined. क्योंकि जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता, पर पहले होता था ना कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो ये वो देखिए, अगर आप वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे आपको आम का पेड़ मिलेगा, वहाँ से आप बाएं ले लीजिएगा, और फिर आगे हो सकता है पुदीना लगा होगा, लेकिन अगले साल अगर पुदीना बदल गया, सपोज किसी ने वहाँ पे मेथी लगा दी, तो आपका रास्ता गड़बड़ा गया, राइट? तो मैथमेटिक्स में क्या है कि कहते हैं इट हैज़ टू बी वेल डिफाइंड, वो ताकि अगर आप 50 साल बाद भी उसको करें तो एग्जैक्टली वही चीज़ होगी, इट डजंट चेंज, राइट? So when we talk about formalization of these problems, हम इनको we are making it more reliable and valid, so that everyone thinks the same thing, right? And this is what science is about. Science is, in science, I don't know if I can find an example immediately, but science में क्या है, जैसे अगर आपने कोई word use किया, that word has to carry the same meaning for everyone, for all the scientists in the field, for all the students. Now, if you go to a different subject, then that word's meaning may change, but then you have to focus on that subject. And ऐसा कई चीज़ें हो रही होंगी आपको, I'm not able to think of a good example right now, but let's say आप ये कंप्यूटर साइंस में भी होता है, जैसे अगर आपने एक वर्ड यूज़ किया डेटा स्ट्रक्चर्स में और सेम वर्ड जाकर के यूज़ किया स्टेटिस्टिक्स में,
तो उनकी मीनिंग बदल जाएगी. So let's in fact let me give you a word. Let's look at bias. Right? So now the word bias you can use it in a social construct कि भाई ये देखिए ये unfairness कर रहा है इसके साथ, ये इसको जबरदस्ती ज़्यादा हेल्प कर रहा है. The bias is also used in statistics. Right? So statistics में if you are let's say you've taken let's say there are 2,500 students in your university, right? And what you've done is you've taken a sample of only 100 students. And on the basis of those 100 students, हम ये determine कर रहे हैं कि हम कुछ predict करने की कोशिश करेंगे कि all those 2,500 students कैसे behave करते हैं. So this is like the standard जो survey करते हैं हम लोग, right? तो हमने survey किया of a small section of the population that is called a sample. और उस सैंपल के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में क्या होगा, राइट? पर अगर जो हमारा सैंपल है वो अगर पूरे पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है तो फिर क्या होगा, हमारा जो कंक्लूजन होगा वो इनवैलिड होगा, वी नॉट बी एबल टू गेट करेक्ट. तो इसके अंदर जो हमारा सैंपल है दैट सैंपल इज बायस्ड इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स, राइट? So this bias is very different from how we use it in sociology, right? Or how you might use it in some like in legal in law, right? So the same word has different meanings. So this is why formalization becomes important. So again, I'll keep refreshing this so that you guys remember this. हमने linear regression किया, where we reduced, improved focus. फिर हमने feedback के बारे में बात किया, which is used for control systems, where you need to get कि आपका जो answer है वो answer से match कर रहा है कि नहीं match कर रहा है, right? So that is the feedback mechanism. अगर नहीं match कर रहा है तो आपको अपना system change करना पड़ेगा. अब ये थर्ड जो है हम लोग सर्च प्रॉब्लम पे आए थे. सर्च प्रॉब्लम बताने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मलाइजेशन का आइडिया दिया. तो सर्च प्रॉब्लम में आप फॉर्मलाइज कैसे करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आप ले लीजिए, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो, उस प्रॉब्लम में क्या होता है, एक सोल्यूशन स्पेस होता है. सोल्यूशन स्पेस का मतलब क्या होगा, आपने सेट थ्योरी में क्या होगा, देयर इज अ डोमेन एंड देयर इज अ रेंज, राइट? तो डोमेन मतलब जो आपका कौन सा सेट है जहाँ से आप लेट मी डू इट मोर फॉर्मली, राइट? सो कोई भी फंक्शन है, अ फंक्शन इज अ मैपिंग, राइट? तो अगर आपने एफ ऑफ एक्स बोला, सो दैट मीन्स कोई भी एक एक्स वैल्यू है उसको आपने एक ब्लैक बॉक्स में डाला, ब्लैक बॉक्स इज द फंक्शन, एंड जो आपका आउटपुट निकला वो वाई है, राइट? सो एक्स बिकम्स मैप टू वाई, राइट? तो अब एक्स जहाँ से आ रहा है दैट इज योर डोमेन. तो एक्स को आपने एक डोमेन सेट से पिक किया, फिर आपने उस फंक्शन में डाला, और वाई जहाँ से आउटपुट आ रहा है उसको हम बोलेंगे रेंज सेट, राइट? सो दीज आर ऑल स्पेसेस. तो लेट्स से फंक्शन मैथमेटिकल है, तो इन वेरी सिंपल टर्म्स द फंक्शन विल टेक लेट्स से रियल नंबर्स, राइट? तो जो आपका डोमेन है वो रियल नंबर्स, मतलब इनपुट वो आपका सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर्स का. जो आउटपुट है, अब हो सकता है जो आपका फंक्शन है वो आउटपुट आपका जनरेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो √-1 भी कहीं पे कर रहा है, जो कि √-1 कॉम्प्लेक्स रहता है. तो जो आपका आउटपुट है वो रियल नंबर्स के लिए, वो आउटपुट जो है वो रेंज सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आएगा, राइट? तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, तो जो सोल्यूशन है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइंड है. सो उस रेंज को हम बोलेंगे, वी कॉल दैट स्पेस. स्पेस में एक सेट है, उसमें सब ऑल दैट स्पेस ऑल द पॉसिबल आंसर्स. इन रियलिटी क्या होगा, इन रियलिटी आप एक इनपुट देंगे, फंक्शन ऑपरेट करेगा तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, राइट? बट दैट वन आंसर विल बी पार्ट ऑफ दैट स्पेस ऑफ दैट बिग सेट, उसमें से कहीं से मिलेगा, राइट? तो सर्च प्रॉब्लम में कई बार क्या होता है, आप उस आउटपुट स्पेस को फोकस करते हैं कि कौन सी स्पेस है जहाँ पे वो आपका आंसर मिलेगा, राइट? तो एक तरीका तो ये है कि आपने स्टेप्स फॉलो किए और आपका आंसर मिल गया सीधे. पर कंप्यूटर के साथ क्या, कंप्यूटर को तो कोई लेकिन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसे, तो वो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं. वो सीधे जाकर के सब आंसर्स को देख करके उसमें से सही आंसर निकालते हैं, राइट? So they can go and, so if there are a million possible answers in your solution space, it actually may have the speed to evaluate each of those answers in a brute force fashion to see कि ये सही आंसर है कि नहीं आंसर है, राइट? तो ये तो बहुत आसान हो गया ना उसके लिए, हम तो स्टेप्स फॉलो करेंगे, हम तो नहीं कर सकते. So this is the other approach of looking at the search problem. One is आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और दूसरा है उसने क्या किया, हर आंसर को जाकर के फिट कर दिया, देखा है दिस इज आंसर और उसने सही आंसर बता दिया, और वो तब भी आपसे फास्ट करता है. So this is one of the mechanisms. This is one of basically looking at the search space, और search space में आंसर निकाल के निकाल. अब एक प्रॉब्लम होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम लोग वी आर ऑलवेज डूइंग इट. व्हाट इज द ऑप्टिमल थिंग टू डू, राइट? अब आप जैसे अब आप नॉर्मली क्या होता है, आप
स्कूल जाते हैं एक रास्ते से जाते हैं क्योंकि वो रास्ता हरा भरा है, रंगीन है, लेकिन आज लेट हो गए हैं, तो आपको लगा ये ऑप्टिमल रास्ता ये नहीं है, शॉर्टकट लेके चलते, राइट? सो यू आर ऑप्टिमाइजिंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड द कंस्ट्रेंट्स दैट यू हैव. कंस्ट्रेंट्स मीन्स आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, पेट्रोल की कमी है, व्हाटएवर, राइट? तो आपको आज छोटे रास्ते से जाना है. So the optimization problem, you can present this in the mathematical fashion. Optimization problem means you are trying to find the optimal answer, the best answer. तो आप लोगों ने कैलकुलस की होगी, उसमें मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन किया होगा, तो कोई भी फंक्शन है उसका आप मैक्सिमम पॉइंट निकाल रहे हैं, मिनिमम पॉइंट निकाल रहे हैं, तो टेक्निकली दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसका एक इसको ऐसे फ्रेज कर सकते हैं कि आपको फिगर आउट करना है कि आपके पास लेट्स से 1000 रुपीज़ है, आपको उसको खर्च करना है 5 अलग अलग चीज़ों में, तो उसको कैसे खर्च किया जाए. तो आपका कंस्ट्रेंट है कि आपके पास 1000 चीज़ें, आपको 5 चीज़ों पे खर्च करना है, सो दैट यू आर फीलिंग द मोस्ट हैप्पी, राइट? सो यू कम आउट एंड फिगर आउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कम अप विद अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हैप्पीनेस, एंड देन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज योर हैप्पीनेस, राइट? सो दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कि उस 1000 रुपये को कैसे ऑप्टिमली खर्च किया जाए सो दैट यू फील द मोस्ट हैप्पी अबाउट इट, राइट? सो नाउ व्हेन यू मेकिंग डिसीजंस, right? So artificial intelligence is about making decisions. Intelligence is through making decisions. जब आप इवन अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो एक्चुअली डिसीजन प्रॉब्लम, राइट? कि उसमें 1000 चीज़ें सोल्यूशन में आ सकती हैं, लेकिन आपने उस एक चीज़ को पिक किया जो इज द राइट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन, तो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, राइट? तो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो डिसीजन प्रॉब्लम है कि अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स को आप, मोस्ट प्रॉब्लम्स को आप, यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अ सर्च प्रॉब्लम, राइट? अब सर्च प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं आप, ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियली ये 10 आंसर्स हो सकते हैं, उन 10 आंसर्स का आपका सोल्यूशन स्पेस हो गया, आपने उसमें से सही आंसर सर्च कर लिया, राइट? सो यू कैन टर्न अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू अ सर्च प्रॉब्लम. सो दिस इज हाउ one kind of mathematical problem can be converted into a different kind of mathematical problem, and then you can if it is possible, sometimes कहता है other kinds of problems are easier to solve, so now what you do is you approach that from that, turn it into, transfer it into another problem and then solve it in that way. So these are the sort of 3 foundations, right? So let me go back to it. So search optimization, या फिर feedback process, control loop के बारे में बात की, और फिर linear regression, focus, attention, reduction of dimensionality reduction के बारे में बात की, right? So I'm using a little more technical term, but dimensionality reduction means the problem is a 5-dimension problem, we reduce it to a 2-dimension problem. So let me go back and connect. हम लोग बोल रहे थे हमारे पास डेटा था स्टूडेंट्स का ईयर वर्सेस द परफॉर्मेंस इन द सेम एग्जाम, राइट? अब हमने उसको लीनियर लाइन में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको 2 डायमेंशंस में निकाल दिया, बट इन रियलिटी क्या था, एवरी स्टूडेंट हैड अ डिफरेंट प्रोफाइल, राइट? तो इन रियलिटी इट वाज अ मल्टीपल डायमेंशनल प्रॉब्लम, हमने उसका डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर दिया. सो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन प्रॉब्लम, right? So this is the other thing you will see. अगर आप, one of the reasons these things become really complex is that वहाँ पे regression की बात होगी, फिर regularization की बात होगी, फिर support vector machines की बात होगी, फिर distribution की बात होगी. But in reality, what you'll see is the problem is getting reduced to a mathematical construct जो हो सकता है आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा. But जब आप क्या कहते हैं, हो सकता है मास्टर्स करने या PhD कर रहे हैं, तो आपने वो कनेक्शन नहीं मेक किया है, सो यू नॉट, बिकॉज यू कम सो फार अहेड दैट नाउ यू फॉरगेट कि व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ इट, बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लेक्स, राइट? तो व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट द बेसिक्स एंड द फाउंडेशंस, तो आपकी हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट आए, जहाँ पे आप यू कैन डेवलप बेटर दिस थिंग. So actually, can I get an idea of where we are in terms of time and then how we should see? Yeah, I mean, so let's. I'll do a quick review of what we've done so far, right? So first, I started off with the importance of truth and honesty and how that applies to technology, right? Because a garbage in will lead to garbage out. अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो गलत डिसीजन होगा, भविष्य बर्बाद होगा. So information has to be valid, and this applies to the artificial intelligence as well. That is why data preparation and data context is extremely critical when it comes to making these decisions.
So see, whenever you think of these problems, I do this all the time. When you're talking about artificial intelligence, go back and look at your own behavior in the real world, because what we're trying to do is we're trying to model human behavior, right? So if you look at intelligent choices in the real world, then you can connect with what the machine is doing. So this was the truth honesty part, and then I talked about how widespread this whole thing is. हर चीज को, every aspect of our life को cover कर रहा है. Nothing is left out, right? उसके बाद फिर I said कि it is also उसमें जो knowledge base किया है वो कितना wide and expanded है, right? Literally millions of scientists and accomplished individuals working for like at least 50 years or 100 years का जो आउटपुट है वो उसमें क्या है, राइट? इस समय हमें बहुत सिंपल कुछ चीज़ें क्या होता है भाई, इट गोज बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ 7th वाले स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगती है वो 12th वाले को बहुत आसान लगती है. सो हम लोग हो सकता है हम लोग को आसान लग रहा है, पर जब वो इनिशियली डिस्कवरी हो रही थी तो वो इतना आसान नहीं था, राइट? सो दैट इज द एस्पेक्ट, राइट? देन उसमें आई टॉक अबाउट हाउ व्हेन यू हैव टू बिल्ड योर एक्सपर्टीज, व्हाट आर द एरियाज यू focus on. So mathematics, some statistics, programming, right? And then application level information. So even if you are, let me also tell you an anecdote again. Let's even if you are, even if अब आप लोग हो सकता है उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग पहले बात कर रहे थे. Let's say if someone is into the legal profession, कोई lawyer बन गया है, right? तो चैट जीपीटी के थ्रू क्या होता है, यूएस में एक लॉयर ने चैट जीपीटी के थ्रू अपने लीगल उसमें हेल्प ली, राइट? अच्छा, तो जब हेल्प ली तो क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, ये केस सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये रूलिंग की थी, तो इसका मतलब नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लॉ. तो लॉ दो तरीके से बन सकता है, एक आपका लेजिस्लेचर बना सकता है, दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग की है तो कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन में वो खुद भी लॉ बन जाता है. तो अगली बार क्या होता है, जब कोई केस आता है तो वो रेफर कर सकता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, तो नाउ दिस इज व्हाट हैज बिकम द प्रैक्टिकल लॉ इन प्रैक्टिस. तो क्या होता है, जब लॉयर जब अपना केस लड़ते हैं तो वो पास्ट केसेस को रेफर करते हैं, पास्ट केसेस में बताते हैं कि देखिए उस समय आपने ऐसा किया था, उस समय उस जज ने ऐसा किया था. तो चैट जीपीटी ने क्या किया, इन ऑर्डर टू हेल्प दिस पर्सन, उसने एक कम्प्लीटली आर्टिफिशियल केस बना करके आपको सबमिट हो गया, राइट? एंड किसी को रियलाइज नहीं हो, बाद में रियलाइज किया कि ये सिचुएशन हुई है, तो ऑब्वियसली इट बिकेम अ बिग इशू. सो व्हाट चैट जीपीटी हैड डन इज, वो लॉ, वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इतना अच्छा बनाया कि वो कोई पकड़ भी नहीं पाया, राइट? एंड बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज मिलियंस ऑफ केसेस होते हैं, है ना? तो मिलियन एक आदमी कैसे, इट्स नॉट लीगल प्रोफेशन इज ए रीजनबली कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन, राइट? तो एक्सपर्टीज, अब क्या कहते हैं, तो एक्सपर्टीज इन लॉ अगर वो सिर्फ एक किसी इंजीनियर ने बनाया होगा तब तो हो गया. So expertise and understanding of law is also critical in not only building the AI system but as part of using the AI system, right? So this is this was what we talked about earlier, and then I talked about how जो expertise है वो layers में build होती है, right? कि क्या कहते हैं, जैसे अगर आप मशीन को भी देखते हैं तो there is hardware, then there is the firmware, then there is the software, then there is software में भी फिर divisions हो जाते हैं, there is database management, there is algorithmic development, right? And then उसके बाद फिर then there would be application level knowledge, तो वो एक variation बनता है. Then we talked about we went into a little bit of a technical aspect. हमने बताया आपको about the regression, about the feedback loops, and about optimization and search. So these are the kind of three aspects that we covered. Now I can take this down further. Is there any particular direction that you want us to take further now? किसी को कोई questions हैं या कोई something what you are thinking that maybe knowing about this would be useful? Any suggestions, feedback? नहीं. अभी तक आप लोग is it helping you? Are you getting an idea of what is going on? ठीक है. तो अच्छा, जिसको नींद आ रही थी उसको अब नींद नहीं आ रही है, ये भी अच्छी बात है. और मैं बोलते समय मैं गलत जगह देखूंगा क्योंकि ताकि किसी को पता ना चले. अच्छा, so now yes. सर आज said कि AI learning बहुत important है and वो बहुत progressive भी होता है. But sir हम लोग इधर भी है, हम लोग somehow AI इंटेलिजेंस सीख सकते हैं. अच्छा, एक मिनट रुकिए.
अच्छा देखिए, मैंने टोपी इसलिए पहनी थी क्योंकि थोड़ा बाल कम है, पर सुनाई नहीं देना, बोलिए। एक महीने पहले बाल अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि बाल नहीं थे, मैंने जानबूझ के थोड़ा काम कराए हैं। हाँ, so I can say what is going हम लोग तो AI इंटेलिजेंस वगैरह सीख सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं because of our financial and done by our parents. But sir, the lower levels classes of people that cannot be learning the intelligence and machine learning, but they artificial intelligence is taking their places, which is not good for us. Very good question actually. In fact, I think this is a good direction for us to take it because see देखिए, the field is so vast कि इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, और तो उसके बाद फिर क्या है कि अगर दे भी दूँ तो आप रिटेन नहीं करेंगे, राइट? तो रिटेन करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो बताई हैं, वो अगर आप रिटेन कर लिए देन ये आपकी वैल्यू बढ़ गई है। तो आई गो डाउन दैट पाथ विच यू आर सेइंग, राइट? एंड दैट पाथ इज दिस टेक्नोलॉजी इज सो डिस्ट्रक्टिव दैट इट कैन cause massive harm. It is going to create greater inequalities, and it can create as much harm or even more harm than nuclear weapons. And तभी क्या हो रहा है, if you see in the Western world, the governments are trying to come up with interactions, including with China, right? The Western governments see China as an enemy, but they want to work with China in order to figure out as to what should be the roadmap for the future of AI and how should AI regulate, and what are the constraints that we should place both on China as well as the Western world so that this is not abused, right? तो आपने सही बोला, because हम लोग की कंट्री में it is even more valid, right? अच्छा, मैं आपको एक अच्छा जो डिवीजन है वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। एक जो थोड़ी एक सैड चीज़ है, बहुत सैड चीज़ ये है कि लेट्स लुक एट द डेटा ऑफ द लास्ट 10 years, right? So and this is linked because economic impact is a very big impact that is happening because of AI, and the economic impact pervades down, it pervades into national security, the ability to have your military, the ability to negotiate, even when you are going for climate change, the ability to build new technology, वो सब economic impact आ जाता है। अगर आपकी country rich है, then you'll be able to build more weapons, you'll be able to build better weapons, you'll be able to advance technology। अगर poor है तो नहीं कर सकते। तो the sad thing is कि देखिए, जो US का पर कैपिटा इनकम है वो पिछले 10 साल में $50,000 से $82,000, $83,000 हो गया है, और हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,600 से $2,400 हो गया। दिस इज सैड, दिस इज एक्चुअली अ फेलियर, दिस इज वेयर लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें क्या गलत किया है, क्या करना है हमें आगे जाने के लिए, राइट? और अगर यही हाल रहा तो हम कभी नहीं कैचअप कर पाएंगे, क्योंकि हमने 1600 से 2400 बढ़ाया, उन्होंने 50,000 से 80,000 बढ़ा दिया। उनकी ग्रोथ 30,000 की हो गई है, उनकी ग्रोथ हमारी टोटल से 10 गुने से ज़्यादा हो गई है, राइट? एंड सो सम ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज अच्छा लोग हमारे भी बहुत स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों में स्मार्टनेस नहीं है, राइट? जो हमारे लोग हैं, कितने लोग वहाँ पे जा करके यू ऑल विल गो देयर एंड यू डू वेरी वेल, राइट? सो क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस हैपनिंग? हमारे स्मार्ट लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम ऐसा क्यों है कि हम ये नहीं कर पा रहे, राइट? सो दोज क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चन यू प्लान। अच्छा, दिस इज हैपनिंग इवन विदाउट एआई। जब एआई आएगा तो ये जो गैप है, दिस इज गोइंग टू बिकम रियली मैसिव, राइट? एक समय था करीब 100 साल पहले जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मिस आउट कर दिया, इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर अस, राइट? हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब मिस किया 100 साल पहले, तो 150-200 साल पहले, तो जब हमने इसे मिस किया उसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्टंट हो गया। उसकी वजह से जहाँ पे हम थे, वी वर काइंड ऑफ नियर द बेस्ट अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वी काइंड ऑफ फेल फार बिहाइंड। ऑफ कोर्स सम ऑफ इट हैपेंड बिकॉज वी वर सब्जुगेटेड बाय फॉरेन इन्वेजन्स, but more the foreign invasions could not have brought about this kind of harm without us having missed out on the industrial revolution, right? Because there are countries in Western world who were subjugated by foreign invasions as well. The United States was subjugated by foreign invasion. उन्होंने अपना सिविल वॉर में उसके पहले ब्रिटिश को बाहर फेंका, राइट? ईस्टर्न यूरोप was subjected to foreign invasions, लेकिन इन सब ने रिकवर कर लिया। तो हम लोगों ने रिकवर नहीं कर पाए। द की थिंग वाज बिकॉज वी मिस्ड आउट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस समय फिर जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया तो वी डिड अ रीजनली गुड जॉब,
industrial information revolution happened in the Y2K. Y2K problem. Have you guys heard of the Y2K problem? Okay, you probably have not, and I knew you would not have because आप लोग उसके बाद पैदा हुए, right? So Y2K problem was year 2000 problem. तो year 2000 problem में क्या हो रहा था कि all of these computational systems, whether they be in the banking system or whatever, तो इन लोगों के साथ क्या हो रहा था कि when they were coded the year, they had coded it. मैं अपने एंटेना के ऊपर थोड़ा कवरिंग लगा देता हूँ because I think it is cold, and with cold what happens is the electronics stops functioning. तो Y2K problem में क्या हो रहा था कि all of this dates were stored in 2 digits, जैसे 96 से 98 है, लेकिन जब year 2000 आ रहा था तो उस 2 digits की वजह से there was going to be a problem. तो किसी ने शॉर्टकट किया, तो they just stored कि देखो 1900 में हम लोग रह रहे हैं, तो 2 digits स्टोर करोगे तो you know what year it is. But once you reach 99 and you go back to 00, then there was a danger that we had no idea as to how the computer systems are going to respond. There was a danger that they could collapse, the banking industry could collapse, transactions could collapse. So there was a need of a massive revamp of existing computational systems around the world. Usme India benefited a lot. That was the time when the software industry in India grew up. We were able to provide all the resources, and I think it started somewhere around probably 1991, 90 when they started thinking about this, and then India became that is what propelled us into becoming a software powerhouse in the world, right? And we are known as a software powerhouse. We still are known as a software powerhouse. लेकिन unfortunately हमने क्या किया है? Artificial intelligence, even though it is based on those same technologies, software is a bigger part of it. We've fallen behind on it, right? So I'll give you some examples. कि जैसे 2022 में जो चाइना ने 29,800 पैटर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोड्यूस किए, यूएस ने 16,000 प्रोड्यूस किए, जापान ने 8,000, कोरिया ने 8,000. तो चाइना वाज इक्वल टू द 3 ऑफ दीज कंबाइंड. हम लोग कहीं नहीं थे, राइट? हम लोग स्मार्ट लोग हैं, वी कैन प्रोड्यूस इट. ऐसा नहीं है कि हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर हम नहीं थे. Similarly, जो papers publish हुए from 2012 to 2018 का जो ट्रांसफर हुआ है, जो रिसर्च हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, so 2012 में 10% of all papers, academic papers coming out on artificial intelligence were from China. 2018 में that number jumped up to between 20 to 25%. US में भी improvement आया, पर इतना improvement नहीं आया. मतलब 1/5 of all the academic work which is of value around the world in the artificial intelligence and machine learning is being done by China. So this is terrible. और ये पिछले 10 साल में हुआ है. Chat GPT टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल में डेवलप हुई है. So the sudden jump that has happened, it has happened very recently. So why are we falling behind? And if we don't pay attention, so this gap is going to become massively difficult. तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. Let's take COVID, right? So COVID is something where you can actually create a virus like COVID using technology. And artificial intelligence plays a big role in it because artificial intelligence allows you to process massive, huge amounts of data which humans cannot process and come up with reasonable conclusions on it, right? Come up with estimate. So the COVID virus can be artificially created using some of these technologies. Similarly, the vaccine, not the vaccine that we used, but the vaccine that was the mRNA vaccines that were being developed in the Western world, they can also be used using artificial intelligence technology. हम लोगों ने जो vaccine use की, that was adenovirus vaccine, वो relatively is a well-known technology. It was well established like 50, 60, 70 years ago, right? उसमें भी कुछ changes हुए हैं, but those changes were incremental changes. जो mRNA vaccine है, उसमें जो changes हुए हैं, वो massive changes हैं. और normally क्या होता है, जब कोई नई मेडिसिन आती है या नया वैक्सीन आता है, it takes up to 20 years for that medicine, for that clinical trials to happen, for us to convince ourselves कि ये क्या कहते हैं valid है. तो एक रोटावायरस वैक्सीन आई थी, that took 28 years from the time when they came up with that this might work to the time that it was allowed to be used. लेकिन कोविड वैक्सीन के केस में जो mRNA वैक्सीन थी, the new technology, they were able to do it within 1 year. And one of the reasons that happened is because of these new tools and technology that is allowing this to happen, right? So ये जो gap create हो रहा है, right? So this gap is extremely dangerous for our future. This is the kind of gap which can lead to people losing their independence.
countries do things independent. This is what had happened जब industrial revolution हुआ तो क्या हुआ? So the countries that benefited from it, they became much more powerful than the countries which didn't benefit from it. So we have हार गए, right? So the key thing, the reason why we lost was because of the industrial revolution. उनका production ability बढ़ गई, productivity बढ़ गई, efficiency बढ़ गई, और that allowed them, gave them more time to develop more new technologies. So that is going to happen again. And so there are two aspects to it. One is the division that is being created within society, within our own country, and the second is the division that could get created across different countries. And both are more dangerous. Within our own country, we can at least show the sense of responsibility that we behave well with our fellow citizens, right? Maybe we are not doing it, that is bad, लेकिन we can change, we should change, and we should show that sense of responsibility. लेकिन when it comes to across countries, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, right? And so the question that you raise is an extremely important question, and at the minimum what it should do is it should fire us, right? And this actually connects with what we started the whole talk with truth, honesty and veracity, right? With removal of bias, with the sense of fairness. And because, again, if the data that is coming in is invalid, the output data is going to be invalid. And this applies, just even if you look at, let's look at weapon systems, right? Artificial intelligence is massively improving weapon systems. अगर हम propaganda करते हैं कि हमारा weapon system बहुत powerful हो गया है, AI के केस में ये सब नहीं चलेगा, right? That is like saying कि propaganda में like हम रांची लेवल का खेल रहे हैं, propaganda कर दिया कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, कुछ नहीं होगा, right? वहाँ पे जाके आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है रियली, right? So this is what is happening with AI. Propaganda नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे पहुँच गए, we have not already reached there. Weapon systems में क्या होगा? तो obviously COVID itself is a potential weapon, right? And उसके ऊपर discussion भी हुआ है और उसको obfuscate भी कर दिया गया, उसको hide कर दिया गया. Then traditional weapon systems में improvement हुआ है, right? Decisions can be made on the field which could not be made earlier. The access of information, sensors that they have, satellite information तो पहले भी होती थी, पर वो ज़्यादा fine हो गई है. Plus huge amounts of data को process करके वो information निकालते हैं, right? फिर दूसरा क्या है? Information war जो हो रहा है. Information war में हम लोग को कैसे derail करते हैं वो? आपके educational system में अगर गड़बड़ आ गया है, तो क्या होगा कि हम गलत चीज़ सीख जाएंगे, right? And ये हुआ है, ये होता है. This is not new. जैसे we just give the example of ChatGPT misleading the lawyers, right? Can ChatGPT mislead scientists? Yes, it can mislead scientists as well, right? तो अब उसने कहीं कोई बुक पब्लिश हो गई, किसी ने बुक पब्लिश करने पे उस पर रिलाई कर दिया, तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन गड़बड़ा आ गई, right? And it is possible to create that information कि बहुत स्मार्ट लोग होंगे वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे ठीक से, and what will happen is further decisions derail the language. This connects with what we were talking about earlier about information and knowledge. Information को copy paste करना बहुत dangerous होता है, because information copy paste करने में knowledge नहीं होती है और उसमें गड़बड़ी होती है. So the example I gave you was paracetamol, right? Now this example also connects with another example let me give you. This is something which we must think about कि यहाँ पे क्या हुआ. We have some of the best doctors in the world, right? The United States has the best doctors, as well as good doctors in the world. Right? It is, in fact, it is ahead of us in healthcare, and a lot of Indian doctors support the United States, right? Western world में बहुत Indian doctors हैं, तो हम लोग की medical ability बहुत अच्छी है. कोविड में क्या हुआ? दो गड़बड़ियाँ. पहले तो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन का प्रमोशन हुआ, right? Now it is established that हाइड्रोक्लोरोक्विनोन से कोई impact नहीं. दूसरा आइवरमेक्टिन का प्रमोशन हुआ. हम लोग को आइवरमेक्टिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में दी जा रही थी on a daily basis, right? आइवरमेक्टिन को जिन डॉक्टर्स ने वेस्टर्न वर्ल्ड में दिया है उनके अगेंस्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ने केस कर दिया कि इसको आप नहीं दे सकते, राइट? उसके बाद फिर क्या हुआ? सो सीधे अच्छा हमारी गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट कोलैबोरेट भी कर रही थी. वी आर बोथ डेमोक्रेसीज, वी आर बोथ फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ? वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग. किसने किसके पीठ में जुड़ा होगा, राइट? अच्छा दूसरा क्या हुआ? वंस दिस इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स टू कम आउट, then that information is further obfuscated. अब क्या होगा? अब आप आइवरमेक्टिन के बारे में केस सर्च करेंगे तो आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सम ऑफ दिस ऑफ कोर्स बिकॉज सर्च कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी से हो रहा है, गूगल से सर्च हो रहा है, याहू से हो रहा है, राइट?
तो वो जो आपको वो मिलियंस ऑफ पेजेस सर्च करके आपको दे रहा है, उसने आपको गलत पेज सर्च करके दिया है, क्या फायदा आपको? वो आपको वो हो सकता है वो क्या करेगा, क्या कहते हैं, कैलकाटा में अलग पेज दिखा देगा, अहमदाबाद में अलग पेज दिखा देगा, बहुत आसानी से कर सकता है वो, राइट? और वो क्या न्यूज़पेपर्स कर देते हैं, प्रिंट न्यूज़पेपर्स इस टाइप का स्कैम और फ्रॉड कर देते हैं, तो वो तो आराम से कर सकता है। इनफैक्ट इफ यू सी फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स all these technology companies have been under the scanner of the government in the Western world, including Facebook. Facebook का देखिए congressional hearings हो चुकी हैं, Google आ चुका है कि जो आप सर्च algorithm प्रमोट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, a lot of these technology companies, चाहे Instagram हो चाहे Facebook हो, ये आपको चाहे तो खुश कर दें, जैसे आप ताली बजा के मेरे को खुश कर रहे हैं और जग भी रहे थे, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये फिर ये चाहे तो आपको डिप्रेस कर दें, अभी आप भू करने लगे तो हमें डिप्रेस तो वैसे फेसबुक ये सब चीज़ें बिल्ड कर देता है, दे अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल, दे अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर, योर नेचर, एंड देन दे कैन कंट्रोल यू। तो देयर इज सब्सटेंशियल एविडेंस कि जो क्या कहते हैं कि वो ये सब कर सकता है। तो सम ऑफ द रीजंस व्हाई द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सो वरीड अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज, एंड आई थिंक वी हैव नॉट डन इनफ ग्राउंड वर्क विद दिस आवरसेल्व्स, is because of this. In fact, I'll tell you an interesting thing. China also, way back in 2012, China was asking these questions in the academic and technology sections. कि ये सब चीजें हो सकती हैं. That is the foresight that they have, right? So देखिए, I don't promote China. However, for us to ignore what they are doing would be stupid, right? So I'm not telling you this to promote them, but I'm telling you this to make sure that we know what they are doing. Right? और जैसे मैं एक जगह आई डॉक्टर में बात करता तो स्टूडेंट की मैंने आस्क की, देखिए चाइना में सर्वेलेंस होता है, ये होता है, वो होता है, तो आई एक्सप्लेन टू देम कि देखिए जो सिचुएशन है वो वी हैव टू बी वरीड अबाउट आवरसेल्व्स आल्सो, वी डोंट हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। अगर हमने चाइना के सर्वेलेंस प्रॉब्लम सॉल्व करके इनके लोगों में कर दिया तो बेनिफिट कौन करेगा? वो करेंगे। हमें अपने सर्वेलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बिकॉज वी हैव टू बेनिफिट, राइट? एंड इसके दो एग्जाम्पल रीजन होते हैं, बिकॉज what you said basically connects with two entities. One is the rule of law, and the other is freedom. And I'll tell you how it connects. And one is because artificial intelligence is giving the power to create scams and create unrest and create weapons and harm in ways that it was never done before. And the second is freedom is important because we know, for example, the truly communist countries, they did not do as well as the countries which are more freedom, as the democratic countries, right? And that is because, why is freedom of speech important? Freedom of speech is not important because of a moral reason. Morality थोड़ी है. Freedom of speech is important कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को मेरे पीछे क्या हो रहा है नहीं पता. अगर मैंने आपको डांट फटकार करके चुप करवा दिया कि तुम नहीं बोलोगे, तो अगर मेरे पीछे कुछ गड़बड़ होगा आप बोलेंगे नहीं, तो कौन किसका नुकसान होगा? मेरा नुकसान होगा ना. So freedom of speech is important because one person does not know everything. The country is not run by one individual or one entity, right? So freedom of speech is important, and that is why communist countries were failing because they were suppressing freedom of speech. For us, freedom of speech is very important because we are a huge, diverse country of a billion people, more than a billion people, right? So, जो innovation हो रहा है, anytime an innovation happens, anytime a scientific progress happens, what has happened? Something has changed. Anytime that we suppress freedom of speech, we are saying that we already know everything, that we will not let change happen. That is dangerous. Progress requires change. In a country of a billion people, there are a billion smart individuals who are processing information and coming up with choices and decisions. We have to allow them the voice to raise their various ideas. And उन ideas जब raise होता है तभी innovation होता है, तभी progress होता है. And so these are the two things, and these are sometimes these are competing with each other, क्योंकि rule of law require करता है कि आपके ऊपर restrictions impose किए जाएं, freedom require करता है कि आप you should have rights and freedoms to be more free to do things, right? तो उन दोनों को balance करना जरूरी है. दूसरा reason why rule of law is important is because this, actually, by the way, this is all connected to artificial intelligence. These are the kind of discussions. That's why I started off with things like truth, veracity, bias, consistency, and so on. So, because around the world, when we are discussing these technologies, they are talking about these things, right?
तो अब रूल ऑफ लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है. वन इज बिकॉज of course everything is stays organized, people don't kill each other, violence ना हो, दंगा फसाद ना हो. दूसरा क्या होता है, जब दंगा फसाद नहीं होता है, जब people are treated fairly, तो इकोनॉमी ग्रो करती है. So this is another well established thing. Banks prefer to give loan, investors go to places where there is peace. Peace leads to prosperity, right? So this is the other reason why rule of law is important. Anytime that there is a failure of rule of law, we should not be hiding that information. We should find out what happened and we make sure we find out, make changes. Either with changes of individuals, changes of groups, communities, or changes of government, because government responsibility. Government behavior is also very important. US में एक बहुत important saying है, you can vote for the government, but never trust the government that you yourself voted for. Right? US में बोलता है. And I'll show you the biggest evidence that they really believe in this is their gun laws. तो gun laws क्या है? Gun laws अभी इंडिया में लोग सोचेंगे देखिए वहाँ पे क्या है, वो लोग जाकर के लोगों को मार दे रहे हैं. बहुत सिंपल चीज़ है, आप गन कंट्रोल कर लीजिए. तो उनका जो गन लॉ है, it comes from the constitution and it comes from the inherent belief, strong belief that even in a democratic government you should never believe the government, because it is the responsibility of the people to keep the government in check. Because who is the most powerful entity in the country? The government. So if the most powerful entity is not kept in check, तो क्या होगा? They will abuse the system. And this happens. This is not about one particular government or one political party. This is about everyone, right? अगर suppose मैं power में आ जाऊँ और मैं system को ऐसे बदल दूँ कि भाई no one is going to abuse me, right? या फिर no one is going to be able to even remove me from power. तो क्या होगा? When I do get removed from power, तब तो जो दूसरा आएगा उसके लिए वो सब सिस्टम बहुत फायदा करेगा. और उसको तो ये फायदा होगा कि मेरे को मैंने तो ये नहीं किया था, ये तो कुछ नहीं किया. तो दिस इज व्हाई some of these things are very critical. Honesty, truth, it applies to AI/ML because if we are talking about intelligence, it also applies to societies. And in fact now we are reaching a point where that distinction is going away, right? Entertainment में अगर आप कर रहे हैं, you are dealing with a machine, you don't even come to know you are dealing with a machine, right? So the distinction is going away. So anything that you're talking about technology, you're talking about the real world. तो जो real world में sociology, चाहे आप sociology major है, political science major है, economics major है, जो भी आप discuss कर रहे हैं, वो सब आप technology में भी आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसको replicate है. So I haven't come up with a solution for you. Your question was valid, and all of these points which I made was related to that. Everyone around the world is struggling with solutions. The other thing which is going to happen is the loss of jobs, because everything is going to become very efficient. And this is the other thing which we have to be very careful of, right? We might say कि देखिए हम सबको free food दे रहे हैं, but that is not the solution. Giving free food to people is a disaster. कि लोग इतने गरीब हो गए उनको free food देना पड़ता है. राइट? तो अगर उनको जॉब्स जा रही हैं तो फ्री फूड देना इज नॉट द सोल्यूशन. अगर जॉब्स जा रही हैं तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल वैल्यू दैट इज बीइंग एडेड इन द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर वी नीड टू अपस्किल द पीपल. राइट? अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या था कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर डूइंग फार्मिंग. फिर एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि जो लोग थे उनको दे हैड टू गेट इनटू डिफरेंट रोल्स. राइट? सो दे वेंट इनटू like academic systems, manufacturing, right? So they started things, and over a period of time after work, in the developed world, agriculture is a very small part of the economy, right? And even though agriculture and food is the most critical part of your existence. So these are the changes that we need to understand. They cannot be done at a superficial level. They have to be done with a depth of understanding, and the depth of understanding has to come from, it doesn't exist in one individual or one entity or one party, right? It exists in the wider society. And इसका मैं आपको example देता हूँ. And this example links to, there's something known as, in technology, there's something known as crowdsourcing, right? तो अब गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, उन सब में आपका सबका योगदान था. And I'll tell you why. We were discussing when we were coming down about traffic jams. So what does Google do? Google आपको predict करके पहले बता देता है अगर आप कहीं आने वाले होते हैं ट्रैफिक जैम हो रहा है. वो कैसे बताता है? क्योंकि कोई और आपका दोस्त उस ट्रैफिक में फंसा हुआ है, उसका डेटा ऑन है, उसको पता है. Google can predict
and they know because the data has been shared. So because of all these people have shared data, Google knows that there's a traffic jam on that particular path, and it is able to tell other people. So other people are very thankful to Google. However, the force is that information is crowdsourced, right? So crowdsourcing is not. This is actually a very superficial example. This is not a good example. In reality, crowdsourcing में technological information crowdsource हो रही है, innovation crowdsource हो रहा है, knowledge crowdsource हो रही है. Not just information, but knowledge भी crowdsource हो रही है. And so this is also the foundation of, let's come back to क्या कहते हैं technology in the real world. तो real world में crowdsource का equivalent क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? The real world में the equivalent of crowdsourcing is democracy, because your decisions are being made through a democratic aspect. So everyone is contributing. Now you might think कि देखो 1 करोड़ आदमी है, 10 करोड़ आदमी है, 100 करोड़ आदमी, मेरा एक आदमी का वोट क्या फर्क पड़ेगा? पर crowdsourcing में भी क्या होता है? And this is what happens when the machine is also processing the information. It is not discarding all the data, right? So the machine is able to process all data much better than individual humans can. And this is what actually happens in the democratic setup also, right? So your crowdsourcing is basically democracy. And if you see all of these things, ये सब interlinked हैं, right? ये सब interlinked हैं. And this is the beauty of this whole like construct, that it is almost emulating life, right? और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पहले भी लोगों को बताया करता था, जैसे अब फेसबुक है, फेसबुक इज बेसिकली एक सत्संग. आप साथ में जाकर के आप मस्ती कर रहे हैं. वैसे कई बार जो है वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, राइट? क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इसलिए कलेक्टिंग चल रहा. तो ये क्या, जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं, ये होती आई हैं हज़ारों साल पहले, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डूइंग द फाउंडेशन इज द सेम थिंग, but now what we are doing it, we are making them more efficient, and we are making them using technology. So if you are thinking of being entrepreneurs, you are going into business at some point of time later, these are the various that you have to think of, right? Because value कैसे add किया. Okay, so thanks a lot for your question. You showed the courage. That's also very nice. Courage is a very important part of learning, right? Because खुश होने की बात है, खुश किया सब लोगों ने आपको. And all of you have shown courage because you have all chosen a stream that not many people will choose for, right? Mathematics में कितने लोग बचपन से लगे, इसको भी ताली बजा दीजिए. And then I think we can conclude now, unless you want me to make a formal conclusion. I think we can conclude at this point. Thanks a lot, guys. On behalf of SMS Lucknow, I extend my heartfelt gratitude to guest speaker, Mr. Pranjal Pathak sir, for gracing us with an illuminating lecture on building expertise in AI and ML. Now, without further delay, I would like Dr. Dharmen Singh sir to present memento to our guest. And I also want Dean sir to present shawl to our guest. I would like to call our GM sir to say some words.
मुझे मालूम है मैं ऐसा मैं मुझे इसलिए बुलाया मैम ने कि वोट ऑफ थैंक्स बोलूं, और आप लोग चिंता मत करो, मैं केवल थैंक यू ही बोलूंगा। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली एक्सपर्ट्स का है, ठीक है, और मेरी तो डेजिग्नेशन ही जनरल मैनेजर है। तो आई एम हियर पर्सनली टू थैंक Pranjal Pathak ji. He accepted our invitation. I had the opportunity of listening to him. He is